Hello everyone, welcome to your own YouTube channel Study with Rameshwar. In the previous video of class 5 textbook Our Wondrous World, that is TWAU, the world around us, the new textbook, and chapter number 2, Journey of a River. So in part 1 we have studied about how the water originate and from where it originate, how many states occupied or covered by the Godavari river that we have studied. So now in this video we are going to see the life I hold, means in what manner the Godavari river help us to human beings as well as the living beings. So I flow all year round, which makes me a perennial river. So here is the one concept, children, that is perennial river. So perennial river means kya? A river which is having a water for a whole year, throughout the year. मीन्स ऐसी नदियाँ जिनको पूरे साल नदी को पानी होता है, ऐसे रिवर्स को कहते हैं पेरिनियल रिवर. So some rivers flow only when receive water in the rainy season. कुछ ऐसी रिवर्स होती है जिनको पानी सिर्फ रेनी सीजन में होता है. सो दैट टाइप ऑफ रिवर इज नोन एज सीजनल रिवर. ऐसी रिवर्स को कहते हैं बच्चों सीजनल रिवर्स. ठीक है. सो पेरिनियल रिवर एंड सीजनल रिवर. आई पास थ्रू रिच फॉरेस्ट full of wildlife including tiger, then barking deer, Indian golden gecko. So here children, the Indian golden gecko, it's a kind of a wild lizard. It's a kind of a wild lizard. And the famed red sandalwood trees. You have learned in the last chapter that freshwater sources like me are home to many plants and animals. As we have studied children in the previous lesson, that is water essence of life, उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रेश वाटर सोर्सेस जो है वो क्या है, होम ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल. मतलब वहाँ पर ही लोग बसते हैं, इवन प्लांट्स भी एंड एनिमल्स ऑल्सो. ठीक है. सो नाउ व्हेन आई रीच द सी, I spread out into many small streams that form a delta. और जब मैं ऐसे जो रिवर गोदावरी है वो कहाँ पर पहुँचती है, एट द सी, दैट इज़ अ बे ऑफ बंगाल, बिकॉज गोदावरी रिवर्स ड्रेन इट्स वाटर इनटू अ बे ऑफ बंगाल. सो जब वो वहाँ पर पहुँचती है, सो इट फॉर्म अ डेल्टा. सो व्हाट इज मीन बाय डेल्टा? Delta is a triangular shaped landform at the mouth of a river. So this concept पर मैंने एक short video बनाई है. You can see on my channel what is the mean by delta. ठीक है. Then what is mean by tributary, what is meant by Western Ghat. So these short videos I have made on my channel, so you can find out the video in my channel only. So my fresh water meets the salty sea there, and this place is called as Koringa mangrove forest. So Koringa mangrove forest, it's a protected forest reserve and where my journey ends. And this Koringa mangrove forest is located in Andhra Pradesh, children. Where it is located? In Andhra Pradesh. ठीक है. So it is, and at that place the Godavari river drain its water in a Bay of Bengal. Now the many ways I support lives. The many ways I support lives means how the river help us to the people like that. The people have always built their homes near rivers, water or bodies. Can you guess why? So we all know
means wherever in the previous lesson also this type of question came, जहाँ पर पानी है वहाँ पर ही लिविंग बींग्स पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑल द थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द वाटर ओनली, रिवर water only, and that's why the needs of a livelihood or needs of the people which are completed due to the presence of a water. So all the living beings, or they construct their home, or they can spend their life near to the river water or the water bodies. Okay, so do you know the many ways I support people every single day? I provide water to people in the many towns and villages around me. ठीक है, द वाटर फॉर ऑल हाउसेस, स्कूल्स, फील्ड्स कम्स फ्रॉम मी. जो भी घरों में पानी आता है, स्कूल्स में, खेती के लिए जो पानी मिलता है वो नदी से मिलता है. आई नॉट ओनली हेल्प पीपल ड्रिंक, कुक एंड वॉश, बट ऑल्सो हेल्प देम टू ग्रो फूड एंड मेक थिंग्स इन देयर फैक्ट्रीज. तो मैं सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं तो क्या, वॉशिंग हो गया, फूड ग्रोइंग करने के लिए, सो फैक्ट्रीज में जो काम चलते हैं उसके लिए भी पानी मिलता है मेरे से. सो माई वाटर इज़ कैरिड इन पाइप्स एंड कैनल्स एंड शेयर्ड बाय मेनी. और जो भी पानी कैरिड किया जाता है वो पानी सब तरफ स्प्रेड होता है. सो नाउ सी हियर, सो वन मोर कंसेप्ट इज देयर, दैट इज इको टूरिज्म. चिल्ड्रन, ecotourism. So what is meant by ecotourism? So ecotourism means visiting a natural places like forest, river or mountains to enjoy their beauty, watch animal or birds and learn about nature without harming the environment. तो इको टूरिज़म मतलब क्या, जैसे कि हम कहीं पे भी जो नेचर ऑब्जर्व करने जाते हैं, नेचर में एंजॉय करने जाते हैं, तो नेचर की जो ब्यूटी, उसमें हम एनिमल देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, तो लॉट ऑफ द थिंग्स वी कैन लर्न. तो किसी प्रकार का नेचर को हमें हार्म पहुंचाना नहीं है. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ इको टूरिज्म. सो चिल्ड्रन, इन योर ऑन द टेक्स्ट बुक ऑफ ईच पेज देर इज सम facts are given. So here is one fact: the Chenab rail bridge is built in India, is the highest and bridge in the world. Highest railway bridge in the world. यहाँ पर देखो, आपके ताऊ बुक में जो है हर पेज पे कुछ तो भी फैक्ट्स दिए हैं, करंट जनरल नॉलेज के फैक्ट्स दिए. द चेनाब रेल ब्रिज इन द इंडिया इज द हाईएस्ट